कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड वणकम। आप सभी जानते हैं कि आज 11 दिसंबर है और आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं भारतीय भाषा उत्सव के लिए और इसे हम इंडियन लैंग्वेज डे भी कहेंगे अंग्रेजी में। मैं हूँ तन्वी खुराना और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस भारतीय भाषा उत्सव में। भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है इस कार्यक्रम में, जहां हमें आरआईज देख रहे हैं, आरआई भुवनेश्वर, आरआई अजमेर, भोपाल, शिलोंग और मैसूरू। इसके साथ ही हमारे साथ शिक्षक, बच्चे, प्रधानाचार्य, अभिभावक इस वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएम eVidya चैनल नंबर 9 और चैनल नंबर 11 के माध्यम से, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल के माध्यम से भी। आप सब ये तो जानते हैं कि आज भारतीय भाषा उत्सव है, पर क्या आप ये जानते हैं कि आज का दिन महाकवि भारती जी का जन्मदिन है। इस दिन उनका जन्म हुआ था, उनका पूरा नाम था सुब्रमण्य भारती। ये एक तमिल कवि थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो एक कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार एवं उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य एकता के सेतु समान थे। महाकवि भारती की कविता है मुक्ति का आवाहन। उनकी चंद पंक्तियां मैं यहाँ पढ़ने की इजाजत चाहूंगी। तुम स्वयं ज्योति हो माँ, शौर्य स्वरूपिणी हो तुम माँ, दुख और कपट की संहारिता हो माँ, तुम्हारी अनुकंपा का प्रार्थी हूँ मैं माँ। ये उन्होंने लिखी थी। और सुब्रमण्यम भारती was a proficient linguist. He was well versed in Tamil, Sanskrit, English, Hindi, Telugu, French and had a smattering knowledge of Arabic. Well, he was a lot more than this. मैं इससे ज़्यादा इस मंच पे नहीं बता पा रही हूँ। और इन्हीं महान हस्ती की याद में आज हम मना रहे हैं भारतीय भाषा दिवस। भारत सरकार के इस प्रयास में आज हम देश के हर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इस दिन को मना रहे हैं। 2022 यानी इस वर्ष से इस दिन को 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा भारतीय भाषा दिवस के नाम से और बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। भारतीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 highlights multilingualism and visualizes Indian languages as a great tool for national unity. It suggests that the students of the country should be encouraged to learn the importance of Indian languages under एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। आज के हमारे इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं। मैं 3 उद्देश्य यहाँ पढ़ना चाहूँगी। विद्यार्थियों को भाषाओं के माध्यम से देश की अद्वितीय संस्कृति और विविधता के करीब लाना, विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाओं से परिचित करना एवं विद्यार्थियों के बीच भाषाई सद्भाव को प्रोत्साहित करना और भाषाओं को सीखने के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। उम्मीद करते हैं भारत सरकार का ये प्रयास कामयाब होगा। और ये जो मैंने उद्देश्य बताए, ये बाहर कुछ आप सभी ने स्टैंडीज़ और पोस्टर्स देखे होंगे, उन्हीं में से एक स्टैंडी में ये उद्देश्य लिखे हैं। मैं चाहती थी कि आप सभी इससे परिचित हो, तो उम्मीद करते हैं आपने वो स्टैंडीज़ और जो पोस्टर्स हैं वो देखे होंगे। जो बाहर स्टैंडीज़ हैं उनमें बहुत कुछ लिखा गया है आज के दिन के बारे में। और समय हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। अपने इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत कुछ कह दिया, पर अब आप देख सकते हैं हमारे मंच पर कुछ मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी भाषा शिक्षा विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर संध्या सिंह को। मैम। आप सबका पहले स्वागत है। भारतीय भाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ये हमारे लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। तन्वी जी ने जैसा बताया, तो इस महत्वपूर्ण दिन पर आज हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, जाहिर है बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हुए हैं, थिरु ईसाई कावी रामनन जी जो बहुत बड़े तमिल के साहित्यकार हैं,
उनका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और उसके साथ ही मैं अपने निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी का स्वागत करती हूं कि उन्होंने इतवार के दिन यह समय निकाला। ये अपने आप में वो बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमारे लिए समय निकाला, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उसके साथ ही सचिव एनसीईआरटी के सचिव प्रत्युष कुमार मंडल जी का हम स्वागत करते हैं, जो आज हमारे साथ हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं और उन सब से आप सुनेंगे। और सबसे पहले तो जैसा तन्वी ने बताया कि भारतीय भाषा दिवस आज किस लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको मनाने की, ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु के या यूँ कहिए कि पूरे भारत के महाकवि के रूप में जाने जाने वाले सुब्रमण्य भारती जी के जन्म दिवस को इसके लिए चुना गया। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय भाषाओं के दिवस को दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए साहित्यकार को चुना जाना, साहित्यकार की जन्मतिथि को चुना जाना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यकार ही भाषा को बचा पाता है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्यकार ही भाषाओं को बचा करके चल रहे हैं। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि इतने वर्षों बाद भी ऋग्वेद और वेद की ऋचाएँ आज हमारे पास हैं, सुरक्षित हैं, लोगों ने उसे बचा के रखा है। और इसलिए बचा के रखा है कि उस साहित्य में कुछ था, उसमें बहुत बड़ी बात थी। तो ये बचा के रखने की जो परंपरा जो साहित्य ही करता रहा है, इसलिए आज के दिवस को अगर तमिलनाडु के बहुत बड़े या भारत के महाकवि सुब्रमण्य भारती के नाम पर शुरुआत की जा रही है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए हम सबसे पहले तो इसका स्वागत करते हैं। भारत सरकार ने ये शुरुआत की, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं के संबंध में हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी 2-4 लाइन, क्योंकि मुझे यहाँ बोलना नहीं है, लेकिन हमारे जो विद्वान लोग यहाँ इकट्ठे हैं, 2-3 बातें बस मैं कहना चाहूँगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे एनसीईआरटी भी बहुत सारा के काम कर रहा है, बहुत सी चीज़ें आप बाहर देख भी पाएंगे, पोस्टर्स भी हमने लगाए हैं। तो 2011 की जो जनगणना के मुताबिक जो भाषाओं की स्थिति है उस पर हमने बहुत सारे पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। 121 भाषाएं जो हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हमारे यहाँ गिनी गई हैं, उन सब के बारे में कितने लोग बोलने वाले हैं ये संख्या भी आपको वहाँ है। हमने ये सारी तैयारियाँ की हैं आपके लिए। इसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि भाषाओं को बचाने के लिए, भाषाओं के विकास के लिए जो काम किया जाना चाहिए, उनमें अगर हम लोग अपने भारतीय भाषाओं की विशेषताओं को देखें तो 3 बातें मुझे बड़ी महत्वपूर्ण नज़र आती हैं। उन तीनों नज़रिए से, तीनों दृष्टिकोण से हमें भाषा को देखना चाहिए। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी भाषाओं में कहीं कुछ है कि जो एक शब्दों की दृष्टि से, भाषिक संरचना की दृष्टि से भी कभी कभी आप पाएंगे, व्याकरण की दृष्टि से कभी कभी आप पाएंगे, एक कहीं समानता भी नज़र आती है। सारी भारतीय भाषाओं में एक कहीं समानता भी नज़र आती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो यह होगी कि कई बार जिन भाषाओं ने शासन किया है किन्हीं राज्यों में, उन भाषाओं की शब्दावली कहीं ना कहीं उसमें गुम्फित होती चली गई। एक बड़ी वजह यह भी है, कई बार व्यापार के कारण, आवागमन के कारण ये शब्दावली कहीं चली गई, आपस में मिलती चली गई। यह कहना अनावश्यक होगा कि किस भाषा से कौन सी में गई, ये बिल्कुल ही बेकार की बात होगी। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सब में कहीं ना कहीं एक समानता दिखाई पड़ती है और संरचना के स्तर पर भी, शब्दावली के स्तर पर भी, यानी भाषिक स्तर पर भी एक कहीं ना कहीं समानता दिखाई पड़ती है। एक दूसरी बात जो सिर्फ हम संदर्भ देकर मैं छोड़ देना चाहूँगी कि एक दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे दिखाई पड़ती है, वह दिखाई पड़ती है साहित्यिक संदर्भ। वो उसको भुला नहीं जा सकता। जब साहित्य अकादमी की स्थापना हो रही थी, उस समय हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था ये, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया बट लिटरेचर इज़ वन। हमारी साहित्य एक ही है, एक ही साहित्य कई तरह से अपनी बातें कह रहा है, कई तरीके से चीज़ें अभिव्यक्त हो रही हैं। तो यह समानता भी आपको दिखाई पड़ेगी। और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं देखना चाहूँ तो उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय का जो दौर था, उस दौर की रचनाओं को अगर हम लोग देख लें, और ना हम पूरा ना भी देखें, कम से कम शोध के दौरान ये हम लोग को देखना चाहिए, आप पाएंगे कि 1910 के आसपास ही हमारा राष्ट्रगान लिखा गया था
1910 के आसपास ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा लिखी थी। 1910 के आसपास ही तीर्थ नाम की एक कविता उन्होंने लिखी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए उसको याद कर रही हूँ कि आज सुब्रमण्यम भारती को जब हम याद कर रहे हैं तो लग रहा है कि सुब्रमण्यम भारती से कैसे एक साथ एक ही तरह का स्वर कैसे इन सारी रचनाओं में आ रहा था। बिल्कुल वही स्वर उनके यहाँ भी सुनाई पड़ा था। एशो एशो हे अंग्रेज, एशो एशो हे हिंदू, हे एशो एशो हे मुसलमान, सबको बुला रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस भारत के महामानवेर भारत सागर तीरे तुम्हारा आमंत्रण है, तुम आओ, तुम सबका आमंत्रण है। अपने अपमान के भार को उतार के आओ, अपने उपेक्षा के भार को उतार के आओ। वो पूरी तरह से बुला रहे थे। बिल्कुल इसी तरह की एक रचना मुझे महाकवि सुब्रमण्यम भारती की भी दिखाई पड़ती है, जब वो कहते हैं कि जो गंतुक भारत और आगंतुक भारत दोनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो भारत जा रहा है और जो भारत आ रहा है। जो भारत आ रहा है उसका वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आते हुए भारत में उनकी अपेक्षा है। वो कहते हैं कि आओ आओ आओ। कौन सा भारत आएगा? वो जिसका माथा चमकता हुआ है, वो भारत जो सम्मान, जो अपने अपमान के भार को उतार करके आ रहा है, वो भारत जो किसी तरह की उपेक्षा या यूँ कह रहे कि कुंचित नहीं है, ऐसे भारत का वह आमंत्रण कर रहे हैं। आओ आओ आओ। वो भी बिल्कुल इसी तरह से स्वर आपको दिखाई पड़ेगा, ध्वन्यात्मक साम्य भी दिखाई पड़ेगा, अर्थ साम्य भी दिखाई पड़ेगा, और ये उसी समय की रचना है। ये महत्वपूर्ण बात है कि एक खास दौर में एक खास तरह की साहित्य दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल इसी तरह से एक तीसरा, जो मैंने कहा 3 बातें मैं खास तौर से यहाँ गौर करना चाहती हूँ। एक तीसरी बात देखी जाए तो वो भी संदर्भ शैक्षिक संदर्भ है, ऐतिहासिक शैक्षिक संदर्भ कह सकते हैं। एक समय था जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे। उस समय भाषा कौन सी हो, हमारी शिक्षा का माध्यम कौन सा हो, ये समस्या उस समय भी चल रही थी। और आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। आसान बात नहीं कि 200 साल बाद भी हम कई बार उन्हीं बिंदुओं पर टिके हुए हैं। कई बार ये स्थितियां आ जाती हैं। उस दौर में भी हो रहा था कि भारत को अगर हम शिक्षित करना है तो कौन सी भाषाएं होंगी? वो भारतीय भाषाएं होंगी। ये कुछ लोगों ने कहा था। जाहिर है मैकॉले ने नहीं कहा था। मैकॉले को हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि मैकॉले इस तरह की चीज़ें, उसने अंग्रेज़ी पर जोर दिया। इवन केवल मैकॉले नहीं, हमारे भारत के भी बहुत समय कुछ लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ी को ही चुना था। लेकिन कुछ अंग्रेज भी उस समय ऐसे थे जिन्होंने यह सोचा, जिन्होंने हेलिमिंस्टन को आप देख सकते हैं, मिंटो को आप देख सकते हैं, मनरो को आप देख सकते हैं, जिन्होंने बाकायदा यह कोशिश की कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारत को शिक्षा दी जाए। और यही इसी का नतीजा है कि पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बनारस हो, इन सब जगहों पे कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई उस दौर में, जिन संस्थाओं ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की शुरुआत की। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये संदर्भ हमें इसलिए याद कर लेना चाहिए कि उन सारी चीज़ों को हम जब आज भारतीय भाषाओं को लेकर बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जोर दे रही है और भारत सरकार जिस पर काम कर रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भी हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भाषा, किसी देश की उन्नति, किसी देश के विकास को की जब भी संरचना हुई या जब भी कोई कल्पना की गई, परिकल्पना की गई, तो भारतीय भाषाओं को उसका आधार माना गया। उस समय भी और आज भी हम लोग यह मान कर चल रहे हैं। उसके बगैर जाहिर है हम लोग कहीं अपनी बेहतर शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। तो भारतीय भाषाएं, या यूँ कहें कि भाषा एक अग्नि की तरह है जिसे हम बचा के रख रहे हैं, जिसे आज भी हमने बचा लिया है, पानी की तरह, जल की तरह, अग्नि की तरह। सारी चीज़ों के बावजूद इनको आज हमने बचा रखा है, और बचा रखा है न केवल इस रूप में बल्कि इसके समृद्ध साहित्य के रूप में। वैदिक संस्कृति आज जीवित है तो भाषाओं के कारण जीवित है, निश्चित रूप से। इतने हजारों साल बाद भी अगर वो है हमारे पास, तो वो भाषा और अद्भुत उसका जो साहित्य था, अद्भुत जो समृद्ध साहित्य था। तो आज इन्हीं बातों के साथ आपका मैं स्वागत करती हूँ, आप सब लोगों का, कि आज इस उत्सव में हमारे साथ आप शामिल हैं। और जाहिर है जिनके हाथों में इसकी बागडोर है वो युवा हमारे साथ ज़्यादा है यहाँ पर है। बहुत से कॉलेजेस के विद्यार्थी भी यहाँ पर आए हैं, हमारे NCERT के
विभागों के, अन्य विभागों के लोग भी हैं और हमारे खुद के विभाग के बहुत से सदस्य यहाँ सारे उपस्थित हैं। और हमारे जो यंग साथी जो हमारे साथ रात दिन काम करते रहे, बहुत मेहनत की उन्होंने और बहुत मेहनत से ये काम किया, उन सब का यहाँ मैं स्वागत करती हूँ। और फिर से एक बार आपको भारतीय भाषाओं दिवस के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इन चंद शब्दों के लिए। और साथ ही साथ जिस प्रकार आपने कहा कि भाषा अग्नि की प्रकार है, जल के प्रकार है, जिसे हमने बचा कर रखा है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और जैसे कि आपने स्टैंडीज और पोस्टर्स लगाए हैं, मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। कल जब मैं लंच के दौरान नीचे जा रही थी तो कोई भाई साहब थे नीचे स्टैंडी के पास खड़े थे। एक स्टैंडी में भाषाएं लिस्ट है, भाषाएं कितनी हैं और उनके भाषा भाषी कितने हैं ये उनमें मेंशन है। तो उन्होंने बोला क्या आप जानते हैं कि कल 202 में एक कार्यक्रम होने वाला है इससे जुड़ा हुआ। मैंने बोला हाँ जी, मैं उसे होस्ट कर रही हूँ तो मुझे पता है। तो हम दोनों खड़े हो गए और हम दोनों ने देखा कि 121 भाषाएं हैं हमारी, जिसमें से हिंदी जो है उसमें टॉप नाम था और जो आखिरी नाम था 121 वो था जू। हम नहीं जानते कि वो भाषा कौन सी है, पर फिर भी 121 भाषाएं बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी देश के लिए। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई भी ऐसा देश है जिसमें इतनी भाषाएं हैं, कोई नहीं है। तो आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। सो थैंक यू संध्या मैम वंस अगेन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटिफुल इवेंट। और आगे बढ़ेंगे हम और हम अनुमति करेंगे प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी का। आपसे कौन परिचित नहीं है सर, आप हैं एनसीईआरटी के निदेशक एवं कर्ता धर्ता। सर कृपया मंच पर पधारिए और अतिथियों को संबोधित कीजिए। धन्यवाद। पहले आप सबको भारती जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्हीं के जन्मदिन के आधार पर भारतीय भाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में एक मूर्धन्य विद्वान भारती जी के ज्ञान के जो मर्मज्ञ हैं तमिलनाडु से, उनको हमने आमंत्रित किया था और मैं उनका स्वागत करता हूं। तमिल साहित्यकार और आलोचक हैं थिरु ईसाई काबी रामनंद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है कि आपने ये निमंत्रण स्वीकार किया और आप उस जगह से आए जहाँ से भारती जी ने पूरे भारत का मस्तिष्क ऊंचा किया और उसको एक प्रेरणा दी, पूरे भारत को प्रेरणा दी उस समय में जबकि लोग गुलामी में थे और आज़ादी के लिए छटपटा रहे थे। तो उस कवि का जो गीत था वो गीत आज़ादी का गीत था। तो वहाँ से आप आए तो इसलिए आपका विशेष स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर प्रत्युष कुमार मंडल हैं, हमारे सचिव भी हैं और इतिहास के विद्वान हैं, अरविंदो के बड़े मर्मज्ञ हैं उनके साहित्य के। प्रोफेसर संध्या सिंह जी हैं, हमारे भाषा विभाग के अध्यक्षा हैं। एनसीईआरटी के हमारे सभी शिक्षक बंधु और बहनें हैं और सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आरआई से भी हमारे परिवार के लोग, एनसीईआरटी परिवार के लोग जुड़े हुए हैं और सब बच्चे यहाँ पे काफ़ी, जैसा आपने बताया कि ये उत्साह की बात है कि काफ़ी युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है और यही आशा की किरण है, क्योंकि युवा होना अपने आप में बड़ी बात है और फिर उसमें उत्साहित रहना और एक कौश के लिए आगे बढ़ना और भी बड़ी बात है। क्योंकि आप देखेंगे भारती जी का जीवन कोई लंबा नहीं था, 38 साल का जीवन था उनका, केवल 38 साल में, है ना। 11 दिसंबर 1882 को उनका जन्म हुआ था और इतने कम समय में वो क्या कर गए। जितने भी हुए आप देखिए, शंकराचार्य जी से देख लीजिए, आदि शंकर से देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, जितने भी महान लोग हुए उन्होंने अपनी जो भी ऊर्जा थी उस क्षमता को, उस ऊर्जा को देश के लिए उत्सर्ग किया। और वो इसलिए मैं कई बार एक श्लोक की तरफ ध्यान दिलाता हूँ जिसमें कहा गया अलातम तिंदुकश्चैव मुहूर्तम अभिज्वला, है। तेंदु के पत्ते की तरह धुआं करके नहीं जलना, बल्कि एक साथ जल करके अपने जीवन को ऐसा बनाओ, देदीप्यमान बनाओ। जो कि इस तरह से भारती जी जैसे लोगों को हम याद करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि वो कवि थे, इसलिए करते हैं कि वो कवि से बड़े राष्ट्रभक्त थे। और जब देश में भाषाओं की विविधता की बात आती है तो कौन सा देश ऐसा है जो इतना विविध प्रकार की संस्कृति और सभ्यता से बना हुआ है। भाषाएं संवाद का केंद्र हैं, संवाद का माध्यम है
और जितने भी हमारे तत्व हैं इस देश में, देखिए आप कितनी ऋतुएं हैं, कितने नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, कितनी वनस्पतियां हैं, कितने पक्षी हैं, कितने इसमें जानवर हैं, कितने प्रकार से हम लोग संवाद करते हैं। तो भाषाएं संवाद का माध्यम है। ये संवाद जो है ये सब तत्वों को जोड़ता है, इसलिए इतनी भाषाएं हैं। और जगह कम भाषाएं हैं क्योंकि उनके पास विविधता है ही नहीं, और जो विविधता जिसके पास नहीं होती वो समग्रता की बात नहीं कर सकता, वो एक की बात करता है। सिर्फ एक की बात हम भी करते हैं, बट हम कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। यही भी विविधता को स्वीकार करने की भावना होती है। सत्य एक ही है मगर उसको अलग अलग तरह से सब लोग कहते हैं। मगर एक सत्य और एक ही तरह से कहो, जो ऐसा कहता है उसकी सोच एकांगी होती है, और वो उसका दोष नहीं है उसमें। आप ज्योग्राफी को देखिए, आप ज्योग्राफी को देखिए, जहाँ लोग रहते हैं, जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, जो उनको मिलता है उसी से वो सीखते हैं। और हमारी सभ्यता तो जैसे मैं अमूमन कहता हूँ, प्रकृति के साथ संवाद और सामंजस्य बना करके हमारी सभ्यता उद्भूत हुई है, और प्रकृति के साथ ही हमने सब कुछ सीखा है। तो इसलिए इतनी विविधताएं हैं, और उन विविधताओं के धनी हैं हम। वो कोई बाध्यता नहीं है, विविधता ग्राह्यता है, स्वीकार्यता है। और उसको स्वीकार करने का मतलब हम कितने बहुआयामी हो सकते हैं या कितने बहुआयामी हुए हैं, इसी का द्योतक है हमारा ये साहित्य, जो संगम साहित्य से लेकर के और हिंदी साहित्य और तमाम भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है, वो सब हमारी निश्चल अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसी का प्रतीक है। और जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अपने संकुचित भाव में तो रहते हैं तो हम निर्धन हो जाते हैं। और निर्धन कौन होता है? जो असहाय होता है। असहाय वो होता है जो कहीं पर जाए और कम्युनिकेशन न कर सके, संवाद न कर सके। तो इसलिए ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सब हमारे हैं, सब भारत के हैं। और भारती जी ने तो यही तो कहा था, भारती जी ने भारत की एकता का और भारत की जो महान गाथा है उसके लिए तो उन्होंने बात की थी। इसीलिए उनको भरतियार का उपाधि, भारती की तो उपाधि दी गई ना उनको, सर्वोपरि नाम था। भारती की उपाधि क्यों दी गई? वो भारती के लाल थे, माँ भारत के। और उन्होंने, जैसे कि शंकराचार्य जी ने सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक एकता स्थापित की थी पूरे देश की, उसी को आधुनिक युग में भारती जी ने दक्षिण और उत्तर को एक करने का संकल्प लिया था और उसका संदेश दिया था। और वो संदेश इसीलिए दिया था, क्या होता है कि हम लोग जब दुख में रहते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब खुश हो जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। इसीलिए ये देखने की बात है कि उस समय हम आज़ादी के लिए तड़प रहे थे, और आज़ादी के लिए तड़प रहे थे। हमारे लोग अगर एक न होते तो हम आज़ाद हो पाते क्या? नहीं हो पाते। चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं, ये जितने भी महान क्रांतिकारी योद्धा हुए, इन सब ने कभी भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं किया, बल्कि संवाद किया, और संवाद करके जोड़ा लोगों को। और फिर भारती जी ने उत्तर दक्षिण को मिलाने के लिए और बनारस आए। ये जो हो रहा है कार्यक्रम भाषा दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं? अभी आप लोगों को याद होगा, काशी और तमिल समागम जो है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आयोजित किया कार्यक्रम। क्यों किया? क्योंकि भारती जी बनारस में आके अपना उन्होंने उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया, और फिर उसके बाद वो फिर पौंडीचेरी चले गए 10 साल के लिए। एक बैरागी का जीवन, एक सन्यासी का जीवन बिताया, आध्यात्म से नाता जोड़ा। और आध्यात्म से जब व्यक्ति नाता जोड़ता है तो वो फिर सत्य का अनुभव करता है। और सत्य क्या है? सत्य यही है कि ये जीवन तो नश्वर है, क्षणिक है, मगर इसमें हम जो कर जाते हैं वो अमिट हो जाता है, अमर हो जाता है। जैसे कि भारती जी हो गए, और उनके माध्यम से जो भाव हमें मिले, उन भावों को हमें अमर रखना है, उन भावों की प्रेरणा से हमें आगे बढ़ना है। इसलिए छोटे छोटे बातों में अगर हम विवाद करते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये सब व्यर्थ की बात है। अगर हम शिक्षित हैं तो हमें सचमुच ये एहसास होना चाहिए कि हम सबका एक रोल है। हम कुछ समय के लिए यहाँ पे हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं है, वो भी नहीं पता कितने समय के लिए है। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप सोचते हैं कि इस बड़ी समस्या आ गई। मैं कहता हूँ जब जीवन ही परमानेंट नहीं है तो समस्या परमानेंट कहाँ से? आप उसके नीचे इतना क्यों प्रेशर में आ जाते हैं? जब जीवन क्षणिक है तो समस्या भी क्षणिक है भाई, वो चली जाएगी। अगर आप दब गए तो आप दब गए, आपने उसका मुकाबला किया तो आप उठ गए। इसलिए इस मस्तिष्क को, सोच को
एक सकारात्मक दिशा में ले जाना है और ग्राह्यता की तरफ हम बढ़ते हैं तो कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं। हमारी भाषाएं हैं सब। क्या हम शरीर केवल ये बीच का हिस्सा है या मुख है? नहीं, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। शरीर में विविधता नहीं है क्या? कितने शरीर में अंग हैं, कितना सब कुछ है, तभी संचालन होता है इसका। और जो बाहर दिख रहा है उससे भी ज़्यादा भीतर है कॉम्प्लिकेशंस। पूरी मशीन है, कितने प्रकार की हमारी नाड़ियाँ हैं, धमनियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, ये क्या है सब? ये सब विविधता ही तो है। तो इसलिए ये कहना कि विविधता है और हम एक नहीं है, ये मूर्खता है। ऐसे में तो हम शरीर को भी अपना नकार लेंगे फिर कि ये शरीर में तो बहुत सारी विविधता है, हमें कहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ये विविधता प्रकृति की देन है और प्रकृति के साथ ही हम रहते हैं और प्रकृति में सबके साथ संवाद करने की जो प्रवृत्ति होती है वही हमको सचमुच आगे बढ़ाती है और वही हमको जोड़ती है। और जब जोड़ने की बात होती है तभी प्रगति की बात होती है। जब भेद ढूंढने हैं तो छेद होते हैं और छेद होते हैं तो फिर टूटन होती है और टूटन होता है तो बिखराव होता है और बिखराव होता है तो पतन होता है, पराभव होता है। ये कुछ मूल वाक्य हैं जिनको हम अगर विश्लेषित करें तो हम कभी दुखी हो नहीं सकते, कभी हम भेदभाव कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वो उपनिषदों से लेके, वेदों से लेके और आज तक के कवियों ने कहा है। कबीरदास ने कहा, काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। अब देखिए, अगर इसको आप समझते हैं तो आप महसूस करेंगे कि दुखी रहने का कारण क्या है। सब इतनी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, सब सीखिए। ये जीवन किसके लिए है? सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दूसरे को मदद करने के लिए। अगर हमें कुछ आता है तभी तो मदद करेंगे दूसरे, है? तो अगर हम लोग इन छोटे छोटे संकोचों से उबर करके आगे निकलेंगे तो फिर हम जितना भी समय हमारे पास है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि फिल्म में तो टाइम फिक्स होता है, स्क्रिप्ट लिखी होती है, इतनी देर का हीरो है, इतनी देर की हीरोइन है, इतनी देर का विलन है, इतनी देर का वो एक्टर है। यहाँ तो पता नहीं है कितनी देर का कौन है, मगर उतनी देर में भी हम अपने अंदर एक उद्वेग पैदा कर लेते हैं, विभेद पैदा कर लेते हैं और फिर दुखी रहते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अब भारती जी का जो त्याग है, जो तपस्या है, ये जितने भी महान पुरुषों ने त्याग तपस्या की उन्होंने कभी दुख को महसूस नहीं किया। और अगर दुख हुआ भी है तो दुख से कुछ रचना की है। वाल्मीकि का दुख देखिए, वाल्मीकि अगर दुखी हुए तो उन्होंने क्या किया? हम दुखी होते हैं तो दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। अब ये सीखने की बातें हैं। अगर हमें बड़े लोगों से प्रेरणा लेनी है तो उन लोगों के दुख ने किस प्रकार सृजना का बीज उनमें बोया और वो सृजना आज विश्व को सिंचित करती है, हमारी भावनाओं को अभी सिंचित करती है। तो क्या हम अपने अंदर किसी भी कष्ट को संदेश के रूप में, लोगों की प्रगति के रूप में, मंत्र के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकते? तो अगर हम इसको सोचेंगे तो आपकी स्फूर्ति और ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। आप दिन रात काम करेंगे और जब काम करेंगे तो अच्छाई के लिए करेंगे, भलाई के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। तो भारती जी की दो बातें हैं, एक तो भाषा की बात है और दूसरी देश प्रेम की बात है। और उनकी जो भाषा थी वो देश प्रेम के लिए ही थी। अगर वो देश प्रेमी ना होते तो शायद तमिल की बात करके ही वहीं तक सीमित हो जाते, मगर उन्होंने उससे आगे बढ़ करके बनारस में शिक्षा दीक्षा ली, देश को संदेश दिया। संन्यास, इतने छोटे जीवन में 38 साल के संन्यास, 10 साल सन्यासी की तरह भी रहे, जबकि उनके माँ बाप, उनका जल्दी देहांत हो गया था। तो उस हो सकता है उसका दुख उनको निखार ले गया हो। तो मैं यही इस समय ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे बीच में विशिष्ट व्यक्ति हैं जो कि इस विषय पे बात रखेंगे। मैं केवल एक टोन सेट कर रहा था कि हमें किस परिप्रेक्ष्य में अपने को देखना है। और दिवस मना लेते हैं, अच्छी बात है, पर वो दिवस एक दिन के लिए नहीं है, वो हर क्षण वो विचार करने के लिए है। और जब भी हम बड़े लोगों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक आदर्श व्यक्तित्व होता है और फिर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि नहीं, हम भी कुछ करेंगे, हम भी अच्छा करेंगे, हम भी अपनी विविधता को समझते हुए सबको प्यार करेंगे, सबके साथ जुड़ेंगे, सबके साथ संवाद करेंगे, सबकी बात सीखेंगे, सबकी बात सुनेंगे, सबको अपनी बात सुनाएंगे, सबके साथ अपने संवाद से अपने लिए स्थान सृजित करेंगे। और सब हमारे ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। तो मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस प्रकार के अवसर हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, प्रेरणा देंगे और हम अपनी जो गौरवमयी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है,
उसमें एक एक इंच भी अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे देश का ये गौरव अक्षुण्ण रहेगा। धन्यवाद और नमस्कार सबको। बेहद धन्यवाद सर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आपने बहुत सारी बातें बताई सुब्रमण्यम भारती जी के लिए। आपने बताया कि वो किस तरह से देश प्रेमी थे। और मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ हम सभी को उससे प्रेम हो ही जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि भाषाएं संवाद का माध्यम है और सिर्फ इंसान नहीं, पशु पक्षी जानवर सभी संवाद करते हैं और उसी प्रकार वो जुड़ते हैं आपस में। विविधता प्रकृति की देन है आपने कहा, और हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं कि विविधता प्रकृति की ही देन है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी की ओर से हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षक और विद्यार्थी जो कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से हैं, संत हरिदास कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन नई दिल्ली से हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी की फैकल्टी भी हमारे साथ इस रूम में मौजूद है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एक जानकारी और देना चाहेंगे, एनबीटी की वैन बाहर मौजूद है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, तो अगर आप खरीदना चाहें देखना चाहें तो एक बार नज़र ज़रूर डालिएगा। तो हमारे साथ मंच में और भी मेहमान मौजूद हैं और संध्या मैम ने उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, पर हम अब आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे अगले अतिथि प्रोफेसर प्रत्युष कुमार मंडल जी का। सर हैं एनसीईआरटी के सचिव, और सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड एड्रेस आवर ऑडियंस। काम कर रही है ना, सॉरी। आप सबको नमस्कार। On this auspicious day, we have all come together and we are celebrating this Bhasha Diwas. Honorable Director Sir has told you the significance of languages. And before him, our esteemed colleague and head of the Department of Languages, Professor Sandhya Singh, has also told you about the significance of languages coming together. And we have in our midst an erudite scholar. And he is going to tell you something that might attract your attention and will also become instructive about Subramaniam Bharti ji. I would like to draw your attention to 2-3 other things. Languages by themselves are all ancient. For various reasons, linguists and historians try to put a date to them. But if you look into the roots of all languages, spoken or written, then you will find that they go back to where the civilization has started. It cannot so happen that we have suddenly come to invent certain languages. So therefore, there is actually no logical basis for our quarreling on languages. In this particular context, I would like to tell you a story. And the title of the story has been very imaginatively given as the grammar of love. And this story is about the great grammarian that we all know about. He was Panini.
So Panini, as a young boy, went to the Gurukul. As in those days, every other child used to go to the Gurukul. He was a very brilliant, extraordinary student. So ultimately, the Guru came to love him more than anyone else. For so many years, the Guru was trying to find out the basis for putting the languages that he came across on a certain scientific platform by which the languages can come together. And he had collected various samples of languages of so many communities who used to speak in different tongues. So after his education got over, there was its time for convocation. And by the time, Panini was of 24 years of age. As you know, in the Vedic tradition, students used to go to the Gurukul when they were about 8 to 12 years of age. And they used to continue their education for another 12 years, completing the education, if everything goes well, by 24 years of age. So came the time for convocation. And Panini, as it was well decided much before, came on top in the list of students who qualified to be sent out of the Gurukul. By the time Panini's parents had arranged for his marriage, it was time to get into the next stage of life. So the second stage of life, that is Grahasthashram. So he came back, and the wedding, following the usual rituals, took place. But then another student came rushing to his home and said that Gurudev is on his deathbed and he wants to see you immediately. By that time, Panini had not seen the face of his would-be wife. He rushed. The Guruji has called me, so I must be there on his bedside. So Guru's last words to Panini was, look, this much of manuscripts I have prepared. I could not come to any kind of conclusion as to how languages are related to each other. You have been my best student. Now I bequeath, I leave this unfinished task of mine for you to complete. Do you do this? Panini said, this is your order, sir, and I must do it. And from that moment on, he started his journey of finding the basis for languages to come together and stand on a pedestal of scientificity. The other request of the Guru was, now when I am gone, all my students, my pupils, will have no anchor, will have no other teacher. So I also beseech you to become their Guru, because you are the most eminently suitable person who could replace me in this Gurukul. So there commences the journey of Panini. For 40 years, he moved from place to place.
As his biographers say, he went to every nook and corner of not only this Indian subcontinent as we know it today, but also to Central Asia, to West Asia, and also parts of East Asia. Then after 40 years, he came back to the Gurukul and started codifying the basis of languages to come together. And from there came into existence the grammar, which we know in the name of Sanskrit. Sanskritam is the refined form, the basis, the scientific basis of all Prakrits. Prakrit means the languages which are spoken by different people, the communities. Then this publication of the grammar of Sanskrit spread across the country. His disciples went out and set up numerous gurukuls, schools. And this became the first instance of grammar schools cropping up across the subcontinent, which what Professor Sandhya Singh was talking about, Macaulay mentioned in his minutes that India has so many grammar schools. Basic literacy and basic numeracy became the assets, the foundations of school education in this country. We all talk about how grammar schools were set up in England. But do you know when they were set up? They were set up only after 1600 AD. So this is what India gifted to the world during the time of Panini. And now, the news reached the ears of Kashi Naresh. Kashi used to be a center of learning. So he sent elephants, and he sent jewels, and he sent royal robes to invite Panini to come to the capital city of Kasi. Then he was brought with all fanfare and glittering procession. So there, the king asked, "Oh, you great grammarian, what would you wish for yourself? Where, as a civilization, will remain indebted to you for life? You have given us such a great, invaluable treasure. So what would you like for yourself?" And he said, "Now I remember that it was the day of my wedding when my guru asked me to come to the Gurukul and take the onerous responsibility that he entrusted to me. Can I please see my wife?" Immediately the search began, and he was taken to his village. There was almost nothing. As civilization progresses, urbanization happens, new technologies come into existence, his village had been metamorphosed. But with only one exception, there was this small cottage. And as he approached, it was becoming dusk, evening. And there came out a small, emaciated, wrinkled lady with a veil on her head and with a lamp in her hand. She was waiting for his beloved husband,
Panini to come back. And 40 years had passed. Both of them had become old. So the Sanskrit that you know today is a product of this immortal love. And so, you know how Sanskrit came into existence, encompassing the beauties and also the mechanics of so many other languages. But languages thrive only when we have the material foundations to sustain them. The history of colonialism instructs us that in order for our languages to survive and remain alive, we will have also to keep our material basis of civilization in a state of prosperity. Without that, we cannot do anything. And it is Vivekananda, when he went to the West, a question was asked by the Harvard professors of philosophy. What do you have to give us? He said, I would give spirituality. And I have come here to learn from you how to rebuild the material foundations of my country and its civilization. When he came back to India, at Rameshwaram, students came to him and asked, we have all come to know the kind of lectures that you have given to the West on Indian spirituality. Would you also like to give us a similar lecture on Bhagavad Gita? He said, Bhagavad Gita can wait. First, prepare yourself to play football. And that's how the great sages have tried to bring in two things. One of his famous quotations is, to be spiritual, to be civilized, doesn't mean that we must embrace squalor. The India today that we see in many parts is embracing almost as if squalor. Do we want this kind of a country? If our languages, which are carriers of not only of human emotions or the milk and honey of human love, dropping like drips from heaven in autumns. But languages also carry invaluable knowledge and information about science, technology, mathematics, and so many other diverse areas of human existence and continuous struggle for development and prosperity. So we have to bring all of these things together, and then our languages will thrive on their own. And then only this tradition of observing such significant days as days of festivals will realize their full potential. And it's a very ancient tradition that since time immemorial, we have been trying to remind ourselves of such significant aspects of life and civilization by observing such days. And all the fairs and festivals that you know, which are being celebrated in the names of different iconic individuals, are a gift to humankind. So they only remind us about their contribution and also about their significance in our life. So this Bhasha Diwas would be truly successful if we all resolve to come together
and build our nation to be a prosperous, scientifically advanced, as well as a country that would be spreading the milk and honey of human love through its so many languages, which, as I said, Panini had laid the foundation for to come and thrive together like a bouquet of flowers. Thank you. Sir, I must say that was a beautiful story. And the moment you said that Sanskrit is the product of immortal love after the story, I realized that the story was worth listening, and we understood who this grammarian was. He was much more than a grammarian, he was a scholar, and he was there in 4th or 6th century. And we are living in 21st century. So there's a lot of gap, but still we remember him, we get inspired from him, and there's a lot to know more about Panini. Thank you so much, sir, once again for this wonderful story. And with this, let's just move further. And हमारे यहाँ कहते हैं कि बदले पानी 4 कोस पर वाणी. और इस पहचान वाले देश भारत के बारे में हम और बहुत कुछ कह सकते हैं. As of today, the Indian Constitution recognizes 22 major languages of India in what is known as the 8th schedule of the Constitution. So, my next guest is going to show us a glimpse of the linguistic scenario of India. So, let me please welcome Ms. Diksha Kovar. Ma'am है Senior Research Associate, भाषा शिक्षा विभाग NCERT से. Ma'am, please come on stage. नमस्कार. Namaskar, respected Director of NCERT, Secretary of NCERT, HOD Department of Education and Languages, our esteemed guest Thiru Isai Kavi Ramanan, my respected teachers, my colleagues, and the students present here today. सर्वप्रथम मैं सबको भारतीय भाषा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापन करना चाहती हूँ. भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है. भाषा is a means to think. It is the bearer of our culture, our tradition. It is the identity of a community. So today, I would like to make a brief presentation on the linguistic scenario of India and how, despite the linguistic diversity, there exists a uniformity or unity among the different languages in India. I would like to start with the report of Census 2011. The census of 2011 has recorded 121 languages, out of which 22 languages are included in the 8th schedule of India. And the census has recorded 5 major language families: Indo-European language family, Dravidian, Austroasiatic, Tibeto-Burman, and Semito-Hamitic. Researchers have also reported 2 more language families, Tai Kadai, which is spoken in some parts of Assam and Arunachal Pradesh, and Greater Andamanese languages. In addition to these languages, there are 2 language isolates. Language isolates are those languages which do not have any genealogical association with any other languages. These languages are Nihali, which is spoken in the northern part of Maharashtra, and the second one is Burusashki, which is spoken in Gilgit-Baltistan region, the POK region of India. This is the number of speakers of all the language families. We can see here that Indo-European language family has most of the speakers, which is followed by Dravidian, Austroasiatic, Tibeto-Burman, and Semito-Hamitic. And Hindi is the most spoken language in India, which is followed by Bengali.
This is the distribution of the speakers of Indo-European languages. I hope everyone can see it. Is it clear? Bahar, like we have kept standees of these maps as well. Now the main topic that I'm going to discuss is India as a linguistic area. I would like to show the uniformity or unity that these languages have in terms of structure. So India is a home to a very large population speaking a variety of languages which differ from each other. But several linguistic features are distinctive to these languages, but there are some linguistic processes, कुछ ऐसे features हैं जो इन सब languages में common हैं. So from this, we have gotten the inspiration of calling India as a linguistic area. I would like briefly talk about what a linguistic area is. It is basically a geographical area which is inhabited by different languages, which has different features. And in such a situation of prolonged contact, languages come to share many linguistic features, like which are not characteristic of one of the language family. Suppose Hindi speakers has been in very close contact with speakers of Dravidian and Munda languages. And because of this close contact with other languages from other language families, there are some features which we can see Hindi or other Indo-Aryan languages are also exhibiting. So I would quickly go to the features. The first feature I would like to discuss is retroflex sounds. The retroflex sounds are the sounds like da, dha, ra, la, na in Hindi. These sounds are basically characteristic of Dravidian languages. And because Indo-Aryan languages or Indian languages, Indo-Aryan languages are in close proximity with Dravidian and Munda languages, this is why Hindi and Marathi and maybe Punjabi also has these kind of sounds in their sound inventory. This is a list that I have created. We can see the sounds in Hindi, Marathi, Tamil, Kannada, and Malayalam. Now the subject, verb, and object order. All the Indian languages have SOV order, where subject comes first, then object, then verb, except for Khasi and Nicobaris, which are Austroasiatic languages, and Kashmiri, which is also an Indo-Aryan language. They do not have SOV pattern, they have SVO pattern like English, where subject will come first, which will be followed by verb and then object. The next feature is compound verbs. What happens in compound verbs is there are two elements, two verbs. In order to describe or denote a single action or an event, we use two verbs. For example, we can take Hindi example, जैसे बैठ जाना, गिर गया, खा लेना, सो गया. With these two elements, two verbs, we are denoting a single action or single event. So this is a kind of linguistic process or feature we can find in all the Indian languages. I have cited examples from Telugu, Assamese, and Bodo. Next is conjunct verb. Conjunct verb, through one of the primary functions of conjunct verb is to describe or to denote an abstract concept. Basically, it has other functions as well, but one of the primary is to denote abstract notions. जैसे कि love, like, forget, remember, these kind of verbs, in English we use a single verb. But when it comes to Indian languages like Hindi, Assamese, or Tamil, Telugu, we use, first we'll use a noun or an adjective, then we'll add a verb. So two elements we are using to describe a particular action or a particular verb. So this is a linguistic process that is common in all the Indian languages. This is an example from Assamese and Bodo. Then conjunctive participles. One of the functions of conjunctive participles is to denote series of actions. Like in a single sentence, we can talk about different series of actions. Suppose if we take Hindi examples,
राम उठ के मुंह हाथ धुल के खाना खा के स्कूल गया. This is a single sentence. But in the single sentence, we are talking about 4 or 5 actions. If we see, in English, we will use 4 or 5 sentences, then we'll add them or conjoin them through conjuncts, like add, on, or. We can use this. But in Indian languages, we can do it with conjunctive participles, like in Hindi, ke or kar. वो खाना खाकर school गया. It's like that. So it is there in almost all the Indian languages. Now reduplication. Reduplication is the process where one word is repeated. For example, I would take Hindi. We don't have Hindi. Yeah. Okay. I have Assamese example like he maje maje taloy jai. इसको हिंदी में हम बोलेंगे वो कभी कभी वहाँ जाता है. So for occasionally we are using this कभी twice. We are repeating the word कभी again, like once again we are repeating कभी कभी. जैसे वो यहाँ वहाँ, these are the words that we can use for a single word in English or in any other languages. This is an example from Bodo. Again, for repeated action also we can use repetition, reduplication. जैसे in ho we can see jom is to eat. But when we are using jo jom, that means repeatedly eating. Linguistic process which is common in Indian languages. Then the last is echo formation. So here one sound or one syllable is repeated. जैसे in Bodo we can see mansi sansi, that means man and the like. Dao sao, bird and the like. Assamese gari sari, car and the like. Hindi phool, wool, flower, etc. Mota vota, fat, etc. Like that. That's examples from Marathi, Kannada, and Bengali. That's it. Okay. Thus, the above discussion shows how the Indian languages have shared linguistic features and how, despite of the linguistic diversity, they are maintaining some sort of uniformity and unity in terms of the structure. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the beautiful presentation. And like you said, that Indian languages, they share linguistic features, and that's so true. With your presentation, we understood that the Indian languages, the regional languages, they are all connected with each other with certain things. You mentioned conjunctive particles, conjunct verbs, and reduplication and echo formation. So thank you so much for this wonderful presentation once again. अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे बजरंग बली कहार को. इन्होंने एक कविता लिखी है. ओके, इन्हें हम थोड़ी देर में इनवाइट करेंगे और इन्होंने एक कविता लिखी है जो कि बहुत ही खास है और आप तक पहुंचाने के लिए वो इस मंच पर आना चाहते हैं, तो हम उन्हें थोड़ी देर में इनवाइट करेंगे. पर उससे पहले हम आज के हमारे की स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे. हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं प्रोफेसर थिरु Isai Kavi Ramanan. It's going to be our honor to hear his lecture on Subramanya Bharati and Indian languages. Sir, before inviting you, I would like to give you a brief introduction to all our people, all our guests. Sir has been a journalist of the Hindu newspaper for a long period. He's not just a poet, he's an author as well and a literary critic in Tamil. He has authored various Tamil books, including Kamba Darisanam, then Pamaran Parvail Bardi, and he has been actively involved in the literary discourse in Tamil and delivers talks and lectures in India and abroad, which includes England, Malaysia, Singapore, US, and many more countries. So, sir, could you please come here and grace the occasion? And sir, before you begin your lecture, I would request Sandhya ma'am to present you with a small gift. I would request Professor Saklani, sir, please gift him. It's a gift of knowledge.
The books. What can you gift an author other than books? So, before you begin your lecture, we would also request you to make us understand the meaning of your name, Isai Kavi. What exactly does it mean? I'm very curious. Isai means music. Kavi is poet. See, I compose my own songs. I'm not a singer, but I do sing because no one sings my songs. So. May I? Yes. Sanatana, yes. Yeah, yes. Thank you. No problem, no problem. सनातन जगद्वास सत्य धर्मार्थ पारगः अनाहत निवासाय शिवानंदाय ते नमः. Sri Gurubhyo Namaha. My namaskar to all of you. I really need a warm welcome from you all because I come from a place which is hot only 13 months a year. And I was in the midst of Bharati festival in Chennai. For the first time, I didn't pack anything properly. I simply flew to this place. So I become more humble than due here. But if at all I have to speak here after listening to these eminent people and the most pleasant compere I have ever come across, I have to only say Dhanyavad and leave. I am the only person in this august gathering who does not know Hindi and whose wife does not believe that I am a graduate. Even today she doesn't believe so. I have always been a proclaimed dunce in classroom and also outside, but I'm happy. And today, when I have to hobnob with these eminent people, I really felt like a Buddha amongst Buddhas. But when you have a captive audience, you can't be so merciful, you know. I think I will sing a few lines to you first. It's not poetry, it's not music, it's not song, maybe a jingle. Because I confessed honestly, I don't know Hindi, but I wrote this. Okay. You all believe in God, I think. Okay. Start your prayers now. रहेगा हमेशा तेरे प्यारे नाम, मिलेगा सबको ये जीवन का दाम, विधाता तेरा घर ए छोटा सा दिल, बताता तेरे नाम हर एक पल, सुबह शाम रात भी एक ही है धुन, सुबह शाम रात भी एक ही है धुन, रहेंगे मिलेंगे इसी में अमन, इस दिल महफिल का तू है खुदा, इस दिल महफिल का तू है खुदा, बस तेरी याद ही चलती सदा, सच है इस प्यार बड़ा वेदना, सच है इस प्यार बड़ा वेदना, इसमें तड़पना यही साधना, किसी जन्म भी में कुछ ना किया, हर दिन बीते
पासे गया विराट स्वरूप मुझे मिल गया फकीर को तू खजाना दिया हजारों मुख भी तो कम ही रहे कृपा तेरे से हमको शरण मिले. Are you all okay? And you thought that I will go and sit in my seat? I listened to three brilliant pieces. I'm talking to you from my heart today. Really, they set the tone, not for my talk. It was a huge learning experience, right from Sandhya Singh ji up to that charming man, and through one of the most mischievous looking professor I have ever seen. Yeah, you're full of mischief, bubbling with mischief, I know that. These, what they spoke, ladies and gentlemen, can be printed without editing. Such is the way a speech should be made. And I can't. Okay. What was the scenario when Subramanya Bharati was born? That is very much necessary for us to understand. I recall the words of my illustrious father, who taught me that simplicity is greatness. Until the end, he had his punchy sense of humor. I'll just quote one instance when he said, Appa, he was limping. Sir, what happened? Idli fell on my leg, he would say. So he always retained that sense of humor. He said, between the snow-clad hilltops of the Himalayas and the burning sands of Rameswaram lies a geographical unity called India. The wandering minstrels begging for alms in the name of God, the soldier of fortune who joins his regiment near the Chinese border, the band of pilgrims who traverse the north and south and east and west of the quadrilateral upon the triangle, that's India, go about in the confidence that they are among their own people. They felt like that as much in the days of Ashoka and Alauddin Khilji as in the more recent times of British and independent India. Of late, some people were bent upon wrecking all this confidence. And alas, they have succeeded in wrecking it. Hence, a country that was always one has been placed under the necessity of discovering itself as one. That is the toil of integration. Now, this is the scenario which caused the advent of Subramanya Bharati. The situation has not changed much, because I think we have to take a lead from what the eminent gentleman spoke about Panini. It was not a grammar pertaining to a particular language. It is a prescription for the way of life for entire humanity. That's what Panini stands. And Subramanya Bharati says, Nambarum tiralodoru Panini nyalamidil ilakkanam kandadum. Nambarum tiral means incredible prowess. Nambarum tiral, incredible prowess. Ilakkanam kandadum means he had the darshan of grammar. And he founded it. That's what Bharati says about Panini. Saklani ji beautifully mentioned
the need for languages. Why should there be so many languages? Would you ever complain that there are too many flowers in the garden? No, this variety beautifies. No, if you look at it as conflict, then that's all. You lose the charm of life. But if you look at it as variety, it's beautiful. You know why the world is beautiful? I will tell you. The world is beautiful because you are not like me. That's what makes it beautiful. Just imagine a world where there is only one flower, rose, and nothing else. No other flower. Won't it be horrible, I tell you? It will be. This variety makes the whole thing beautiful. What is contrast should not be mistaken for contradiction. Color contrast, we see. You are not uniformly dressed, or I would say, put it properly, you are not dressed in uniforms. Isn't it? That's what makes this hall beautiful. And unless I stand before you, people will not understand how beautiful you are. This contrast is one. Then, like she mentioned, literature is one. Languages are many. Literature is one. Sandhya ji mentioned to you. Recently, one of our Tamil writers by name Shiva Shankari, a very great Tamil writer, she has been upholding the cause of womanhood. She brought up a beautiful compilation traveling up to Kashmir and beyond. Knit India through literature. It's a beautiful compilation. A few hours difference in climate, few hours difference between one place and another. You come across a totally new climate, new set of people, new kind of food, new language. Why not? I have been to the Himalayas 35 times now. I have lived in solitude. So I can tell you with a fair degree of authority and happiness that the languages are many, the customs are different, even the hue and color of ignorance is charmingly different from place to place. But hospitality is one and the same. Professor Meghnadhan took care of me very well, right from the moment I arrived here. Hospitality is the same. In fact, it is not an exaggeration if we can say what is the religion, common religion of India? Hospitality. There is no, you need not fight shy of saying so. I have spoken enough to earn my lunch. Take care of it. So it is on this at this juncture Bharati was born. What juncture? Tamil Nadu was steeped in darkness at that time. Literature was what shall I say? Went into the hands of pundits, scholars. It had no connection with the common man. And anything which comes new, we take to it like they say, duck to the water. That is how English came upon the scene, the language of English. Today I have to speak to you in English. I'm not very happy about it. If I speak in Tamil, you cannot understand. If I speak in Hindi, you will think that my Tamil is also equally bad. So that's why I have to speak in English to you. At that time, there is a beautiful book called The Beautiful Tree. There, it has faithfully recorded the survey of the British made during the middle part of the 17th century. The remarks are very thought-provoking.
they were surprised, they were surprised by what they call it, the arrogance of the common man here. Why he is called the common man? Because our people were not wearing shirts. These dresses were not in vogue at that time. But how will this be in vogue in Chennai? I can't wear this in Chennai. Okay. And to them, the white-skinned people were jokers. It was like that to them. Or things of amusement. They were amused by their presence. So why are these people so arrogant? Let us delve into this deep. And they have conducted a survey. You know, there are 3 or 4 astounding findings which I see there. One is, in South India, survey, there was not a single village which did not have a school. In every such school, both boys and girls studied together in 17th century. Third, this is more astounding. Children belonging to all castes, they were studying in that school. And fourth, I mean, you can call it 3A, but a research scholar like her would call it 3A. But what it says is, even the daughters of Devdasis studied in the same school. It is written like that. And what was taught in those schools? Logic, higher mathematics, astronomy, Puranas, literature, history, and mind you, technical education. It was also taught. And what did the British do? Stroke of pen. That's all. One little sentence. These are not schools at all. Why? For 3 reasons. Why? They don't have a structure. There is no hierarchy. And English is not taught. How can you call it schools? Dismissed it. That's all. This was their most guileful act, I would say, because when you address an assembly, you have to be civilized, you know. So very guileful, I would say, to put it mildly. They dismissed the entire thing. They uprooted the tree of our ancient education, which the professor was talking about, exposed the roots to the sun to make it die and decay. And instead, English came in. There's nothing wrong with the language of English. We all love it. It has become one of the mainstream languages in India. We have no problems or quarrels about that. But we lost sense with our history. We have forgotten our heroes and heroines. There were many. Bharati laments. When Bharati laments, you have to take note. Because even very recently, his original English works, essays, have come out in print. He had a great capacity to translate works across languages. And the way he used to translate, his own editor, G. Subramanya Iyer, who founded The Hindu and Swadesh Mitran, English and Tamil dailies, he remarks that if you give him that telegram, those days no teleprinter, nothing was there. Nothing, no gadgets, no technology, only telegrams used to come. Or 2 days, 3 days later, a newspaper from another country, another land would come. Bharati would take a look at it. He'll read it, cast it aside, and translate the entire thing without referring to it again. That was his capacity. From English to Tamil, from Tamil to English, the very difficult poems of Pattinattar, a saint, and Andal, we call Goda,
Her poems he translated into English. Agni Stomam from Rig Veda he translated. Agni and other essays he translated them into English. Then when his daughter was complaining, you were always composing songs in village tunes. So he translated French national anthem into Tamil and sang it for her. Many such instances are there. And a lot of translation into Tamil of Tagore's works and Swami Vivekananda's talks were also done by him. Mind you, he was a remarkable poet himself, a poet of a caliber which you cannot even imagine. I cannot describe in a few minutes. I would put it this way, because it is mentioned by him in his autobiographical poem, that when he was a 10-year-old boy, he had a love. She was about 9-year-old. Can you imagine? He has written in detail. He says, if it is true love, it should happen only in childhood, he says. Beyond that, so many other things, other aspects come and pollute your mind. Love cannot be pure. And where there is an expectation, it's no more love, it's a trade, he says. So when there is an it's a challenge to the young minds here. If there is an expectation, love ceases to be love, it becomes trade, he says. And one day, they used to spend time in the temple mandaps, which were free, in Ertayapuram, where he was born. One day that little girl said, give me a minute, I'll come back. Suddenly she disappeared behind a pillar or something like that. When she came back, she was carrying, how do I say my in the Shahi? What do you put here? Kajal. A kajal. She brings in her palm. Then she asks him, can I put a bindi on your, bindi only you say, no? Okay. Can I put a bindi on your forehead? He says, yes. Then, as she goes near him, that bindi becomes tilak, like this. And Bharati swoons. He loses his consciousness. The girl disappears. He never sees her again. Adirai திருநாளொன்றில் சங்கரன் ஆலயத்தொரு மண்டபம் தன்னில் நான் சோதி மானொடு தன்னந்தனியனாய் சொற்களாடி இருப்ப மற்ற ஆங்கவள் பாதி பேசி மறைந்து பின் தோன்றி தன் பங்கைய கையில் மை கொணர்ந்தே ஒரு சேதி நெற்றியில் பொட்டு வைப்பேன் என்றாள் திலகமிட்டனள் செய்கை அழிந்தன். You understand Tamil, I know. பிள்ளை பருவத்திலே என்னை பேண வந்தாள் அருள் பூண வந்தாள். One who came when I was a little boy to bless me, to bestow her grace on me. Where is she now? He used to long for her later. That was Subramanya Bharati for you. Okay. And valor or courage was born with him because he was an upasaka of Mahakali. Kali was, what shall I say, her friend, his friend, playmate, mother, lover also. Kali meedu kadal, he would say, I love. In the sense, a boy would tell a girl, unthinkable in Tamil religious poetry at that time. He would say. And that courage, how it brought him then? He had to go into exile in Puducherry, Pondicherry, as you call it now. The British did their best to destroy his life. They intercepted even the money orders, ensured that money doesn't reach him.
all the publications were stopped. Nothing could come into British India. Top it all, they gave money to a dada of that place, a rowdy of that place, because sometimes dada also has a good connotation, but a rowdy doesn't, I suppose so. So they gave money to a person to hit him, to harm him physically. And what was that person? The person's name was Tambala. This incident you should listen. Tambala. Tambala, and how guileful these Britishers were. Tambala belonged to the lowest caste in society. He was scavenger of that time, but he was a rowdy. And where he would live? In some slum, inaccessible slum where nobody would go there. Even nobody goes there. Only when there is election and what necessity, people go there. So his wife learnt about this. Naturally, she was so perturbed, disturbed. What did our hero do? He didn't have a robust body or anything like that. He simply went to his house, hut. Can you imagine? He simply went there. And that Tambala's wife, who was there, was shocked, shell-shocked to see this fellow. Just imagine your target walking into your own place. The target, veritable target. That is the hallmark of a jnani. They move like veritable targets. That is why they could rule over this world. The sway of a poet is like this, that courage is like that. So he went there. The Tambala was not there. His Tambala's wife was so perturbed. She said, he has gone out. I don't know when he would come back. He has to come back, I will wait till he comes back. But he sat on that the small portion outside the hut. Like a simhasan, he sat there, our fellow. Tambala came. He was also shocked. He was also surprised. Why are you? He addresses Tambala and said, how are you? He is asking Tambala. Kaise hai tu? Aap kaise hai? I'm fine, but how come you have come this far? He is asking. No, I heard that you have taken money for doing some special puja to me. So why? I don't want to give you the trouble. So I thought I would come and receive your respects. So I came all the way. He's asking him. What would he say with a stick in his hand and the pichwas? He was just looking like a fool before. Then Bharati asks him, do you know who I am? Then Tambala says, मालूम है क्या बोलो कोनो में बोलो तू एक स्वदेशी है. Then he said, Buddhu, are you a Pardesi then? He's asking. It is recorded history. Because then Tambala asked him back, you know me too well, you know everything about me. Even then you have come here and you are standing before me. Don't you know fear? Is that fear? To Parashakti's pet child? No. Acham illai. Acham means fear. Illai means no. Acham illai. Acham illai. Acham enbad illai. Ichagattullorelam edirthu ninra podilum acham illai. Even if everyone in this world stand in opposition, I have no fear. Duchamaga enni nammai thooru seida podilum. Even if you look down upon me, no, I have no fear. Nachai vaayile konarndu nanbaruttum podilum, even if your own friend comes and feeds you with poison, I have no fear.
கச்சணிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள் சூழும் போதிலும் the most, what shall I say, the most beautiful seductress, even if she casts a glance at me, I have no fear, he says. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை. பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட போதிலும், if I have to live by begging for my food, no problem, I have no fear, I have no fear. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை. இச்சை கொண்ட பொருளெல்லாம் இழந்து விட்ட போதிலும், of all the things which I consider dear, if they have to leave me, no problem, I have no fear, I have no fear. பச்சை ஊன் இயைந்த வேற்படைகள் வந்த போதிலும், if spears with fresh flesh in the tip, they come to accost me, no problem, I have no fear, I have no fear, I have no fear. உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும், if the sky has to crumble and fall upon my head, அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை. This is Subramanya Bharati for you. As our professors explained to you, after his father passed away, he got married when he was 14. His wife was 7. He lamented a lot about this in his autobiographical poem. He didn't want to get married. I'm marrying a doll, he says. And she was a doll, I tell you, in the other sense of the term. It is all right for us to praise a poet. It's not that easy to be the wife of a poet. You ask my wife, she will tell you. She would say, you know how difficult it is to live with a poet? I said, I do. Because that has been my experience for the last 68 years, I said. It's not easy to be a poet first. Because you carry not only your own conscience, you carry the collective consciences of the entire society. It's not that easy. And yet retain your own identity, not of your own volition. Not of your own volition. So it's not easy. So he got married when he lost his mother when he was 5. He got married when he was 14. Then lost his father when he was 15 or 16. And his father wanted to be an industrialist. He was taken for a cruel ride by the British. So everything was destroyed. All of a sudden, his life was reduced to penury, abject poverty. His aunt, that is his father's sister, took him to Kasi. Kasi was a huge eye-opener in the life of Bharati. So that is where he learned Sanskrit well. And he used to write in the pen name of Kalidas, because he was so enamored by Kalidasa's great works. And he named one of his daughters as Shakuntala, because he was reading Shakuntalam then. And then his get-up changed. He was a typical Tamil Brahmin boy, in the sense with a tuft, with vibhuti on his forehead, which was always huge, broad. And then he used to wear his dhoti. In Kasi, all this disappeared. First the tuft disappeared, and then the mustache came. There was no mustache then. Brahmin boys were not supposed to have mustache. But his fellow students used to ask him, why every now and then someone is dying in your family, is it? He didn't know, because they thought that you remove your mustache only when someone dies in the family. So they were making fun of him. The mustache came like this. This is white, that was black. That was the difference. And turban came, the flowing turban came. Very strangely, it was there in the place of his origin, which is called Tirunelveli. It's a place 150 kilometers from south. I was also born there.
and the similarity ends there, okay? He comes from that place. They also used to wear turban. In Kasi also the turban. So the turban, the tilak, which she adorned on his forehead, the mustache, tuft disappeared, and this, what they used to call albeka coat. He used to wear a black coat, and this panjakacha, we call it, dhotis worn like that. So this new look Bharati came up from Kasi. His Hindi was impeccable, it seems. He could easily pass as a North Indian, but a Kashi Pandit or something like that. His Hindi was he was so strong in Hindi. He attended the Congress session in Kasi in 1905, Calcutta in 1906, the most historic Surat Congress in 1907. He was rubbing shoulders with Bal Gangadhar Tilak, who was his political guru. Vipin Chandra Pal from Bengal and Sri Aurobindo from Bengal. Lala Lajpat Rai was very close to him. He organized political meetings in the Marina Beach in 1907, 1908 also to felicitate Vipin Chandra Pal, particularly when his release date was announced. Politically, he became very active. Kasi opened his eyes. It was there that he met Annie Besant and Madan Mohan Malaviya ji. So it was a huge eye-opener for him. And more than that, he plunged into English literature only in Kasi. He was writing under the pen name called Shelly Das. Shelly Das in Tamil. Shelly Das also. So he was highly influenced by Shelley, or inspired by Shelley and Keats. You can see many poems reflect that inspiration. So from Kasi, he came back to Ettayapuram at the invitation of the Zamindar of Ettayapuram. He didn't like it because once the chick comes out of the egg, it never returns to the egg, So it grows wings. So Kasi gave him those wings. Then from Ettayapuram, he came to Chennai. From Chennai, at Chennai, he became a journalist of repute. He was the first cartoonist in Tamil journalism, one of the earliest short story writers in Tamil. Then he was very fluent in Telugu also. So Tamil, English, French, Telugu, Sanskrit, Hindi, Hindustani also, and a smattering in the language of Arabic also, because he, at the fag end of his life, he addressed a group of Muslims near his wife's place. So we come to know of him like this. When there was a time when every stick was thought to be good enough to beat the British with, Bharati chose language as one of the important tools. One is to integrate India through the languages. So he himself learned quite a few languages, as I listed out now. He learned quite a few of them, and he thought the best way is to integrate India through languages, because he realized that this country was always one. You would complain that it was a cluster of different provinces. No, but even then it was one, because even those days the pilgrim was going from Kasi to Rameswaram and back. So he understood clearly that politics divides, culture unites. And our languages, Indian languages, contain only culture, propagate only culture. The culture of hospitality, give and take, forgiveness, all these things come from our languages only. And he took English to beat the British with. He was writing articles in English, in the Hindu, in Aurobindo's Bal Bharat, Arya, those magazines also he wrote, and Tamil he was writing. All this on one side.
On the other side, yes, like Keats used to say, on the viewless wings of poesy. So he was scaling new heights, great heights through the wings of poesy. So that is for Bharata Bhumi, Palamberum Bhumi, Neeradan Pudalvar in Ninaivagattradir, he would say. Palam Perum Bhumi. Bhumi you can understand. Paras means old. Param Perum means ancient. Bharat is not just old, it's ancient. Because we would say every country is old. Australia was not born yesterday, isn't it? So what's so great about calling your country old? Not old, ancient. Because there is a continuous. So far as we are concerned, our culture is present continuous, permanence. So, like that. You mentioned about Tranik. If happiness is fleeting, how can sorrow be permanent? The young mind should understand this. This is the optimism which you can see throughout the writings of Subramanya Bharati. If Sukham is asashvat, how can Dukh be shashvat? That was the question he always asked. Sendradini Meela the Modare, fools, do not lament over what is past. What is past, it will never come back. Neer எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து, you're always thinking of the past. கொன்று அழிக்கும் கவலை எனும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர். You fall into the pit of worry. Worrying. Kavalai means dvantam. Worrying. We fabricate worries, we manufacture worries. சென்றதனை குறித்தல் வேண்டா. Never lament over the past. இன்று புதிதாய் பிறந்தோம். We are born anew, afresh at this moment. என்று நீவிர் எண்ணம் அதை திண்ணமுறை இசைத்துக் கொண்டு. Believe so strongly and keep it as your song. தின்று, eat, விளையாடி, play, இன்புற்று இருந்து, be in bliss, வாழ்வி, live gloriously. தீமையெல்லாம் ஒழிந்து போ. All the thing that is negative will disappear. Thirumbi vara, they will never come back again. This is the optimism which you can see throughout the writing, whether it is prose or poetry or translation or in other languages. You can see this in Bharati. Mind you, a person who was not sure of his next meal, a person's life which was always besieged by dangers and threat for very life, a person who was blessed with two beautiful daughters but no wherewithal to look after them, he says, and a person who was always crying for and striving for the freedom of this country, but there was no hope in sight that India would become free. He could place his hands on his lips and said, Ananda Sudandira Madaindu Vittom Endru Aduvome, he would say. We have attained, let us dance, let us sing that we have attained freedom. How can you see? How can you think of the country? How can you visualize that my country is free, my Bharat is free? When you are living like a slave, that is the thought, that is the power. And Petra Tayum, Peranda Ponadum, Natrava Vaninum, Nani Sirandanave. He says, Janani Janma Bhumischa, Swargana Pigari. Same thing he translates. He says, the mother who gave birth to you and the motherland into which you are born, they are greater than the heavens themselves. Why, mother? Why is our own mother given such a high place in Sanatan Dharma? Can you believe it? I'll tell you give you a practical reply. You will agree. Our mother is the only person. Our mother is the only person who can love us in spite of us. For anyone, there is a reason. I love you because you are beautiful. I love you because you are talented. I love you because you have a lot of wealth. Like that.
but a mother is the only one who can love you in spite of you. She knows your faults, like that. So, Petra Thayum, Piranda Ponnadum, in the motherland into which we are born, they are greater than the heavens themselves. So, I can go on, but suffice to say that Bharati, it will be interesting for you to note that as a 16-year-old boy, one of the first speeches, public speeches he made was in Hindi in Kasi. It was in Hindi in Kasi. And he, at the age of 16, he convened a small setup called Youth Congress and addressed people of his age. So then he had love for integrating this country through different languages. There is a beautiful song in that about that. He says, Sindhu Nadiyin Misai Nilavinile Serananatilam Pengaludani. In the moonlight along the river Sindh. Okay. Why moonlight in Sindh? My father explained this to me. I have been to Ladakh, Leh. So if you look at the Himalayas from above, from a flight, from a plane, it looked like a collection of huge sand dunes with vanilla ice cream on top. Like that it would look. A desert in a mountainous place, it will be like that. And the moon shines at its brilliant best in such a place. When I went to Kailash, I was standing at about 18,300 feet to take a picture. I'm also a passionate photographer. So there, you feel as if you can pluck these stars and bring them home. Like that. Nature is so close to you. So Sindhu Nadi, let us go to the Sindh river, he says. With whom? With the beautiful damsels from Kerala. Where is Sindh? Where is Kerala? And what will you do? Yeah, I'll tell you. He says, Sundara Telunginil Pattisaithu. I will sing songs in beautiful Telugu. Then, Thonigal Oti Vilayadi Varu. We'll row our boat singing songs in Telugu on the river Sindh with beautiful girls from Kerala, and we'll be in bliss, he says. Now I'll sing. Sindhu Nadiyin Misai Nile Serananatilam Pengaludani Sundara Telunginil Pattisaithu Thonigal Ootti Vilayadi Varu. Then he comes to the Gangetic plain. We will take the wheat products from the Gangetic plain. We will exchange it for excellent betel leaves from the Kaveri basin. Then we will listen to the valorous poetry of the Marathas, and we will gift them with elephant tusks from Kerala. Gangai Nadipurathu Godumai Pandam Kaveri Vettilaikumaru Kolvom Singa Maratiyartham Kavidai Kondu Serathu Dantangal Parisalippom Sindhu Nadiyin. This song, is full of integration. It's not trying to unite India. It's trying to tell us that India is one. It has always been one. The best way is to understand this through languages. And the best way to learn a language is through poetry. Sri Aurobindo taught 250 rigs from Rigveda to Bharati at Pondicherry. Bharati taught him Tamil. And then
with this I will take leave of you. Aurobindo suggested a method to learn language. Never learn a language from alphabets, Sri Aurobindo says. He says, go for the best classic in that language. So what is the best work in your Tamil, he asked. He said Tirukural, immediately, those 1330 couplets by saint poet Thiruvalluvar. Okay, you teach Tamil to me from Tirukural. That is how it said. And then if you want to learn Sanskrit, straight away go to Valmiki Ramayana. Best way to learn, simplest writing. Say, or Vyasa Bharata, you can take it. Because Vyasa means compiler, editor. And the brilliant, most honest journalist, in my opinion, was Vyasa. And from Vyasa Bharata only, Bharati took a lot and wrote his epic poem called Panchali Sabatam, the Oath of Panchali, he wrote. In many places, it is a true translation from the original work. A good journalist never gives his views. A reportage is different from views. Vyasa did not bother about what you would think about a particular character when it goes wrong. He just places the facts before you. It's up to you to come to your opinion, like that he gives. So Subramanya Bharati was not only the need of that hour, he was a necessity. He is a necessity for our times also. Language is a present continuous thing, as I told you, because it carries with it it's our own culture, which has been handed down ages, from time immemorial. We are not improvements from apes. We are the descendants of men and women of great talent, prowess, and tapas, most importantly, tapas. So let us remember that Bharati stood for all these things. So in a span of, say, 40 minutes or 45 minutes, I could speak only this much to you. But it was a huge learning experience listening to these eminent people. And if I have to sound honest, no, I have no business to sit beside them. I should be somewhere listening to them like this. And it is wonderful to see these beautiful faces here, brimming with dreams and mischief in equal measure. I would take leave of you by saying these words to you, because most of you are young. I feel I am a relic or a fossil when I look at you. But this much I know, I have understood from life after grappling with the harsh realities. Peace is happiness. Happiness is not peace. Understand this. Peace is happiness. Happiness is not peace. So, you may earn a lot of laurels. Society may honor you. You may become rich. You may become entrepreneurs. This, that, all that is fine. But that they are not the real achievements. Anubhavam, anubhav, it's a beautiful word. That which persists with you, that alone can be called the real experience. And there is nothing greater than peace that should persist with us. So I invoke the blessings of Parasakti and the fiery, passionate, patriotic poet, Bharati, who loved you all, even though you were born later, to bestow upon you that peace, which alone is the lasting happiness. Have a great day, every day from today. Vande Mataram. Yes, madam. Thank you so much, sir, for everything. The instances you shared, I don't think हमें वो किसी भी बुक में, किसी गूगल में मिल सकते हैं, किसी से भी
ये बातें हमें मिल सकती हैं जो आपने हमें बताई सुब्रमण्यम भारती के बारे में. थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत सारी बातें कही, मैं इतनी लिस्ट भी नहीं कर पाई, पर जैसे कि आपने कहा कि दैट द मदर इज़ द ओनली वन हु लव्स अस इन स्पाइट ऑफ अस, एंड शी इज़ द ओनली वन. इसीलिए शायद हम मातृभूमि कहते हैं, दैट्स आवर लैंड, एंड मातृभाषा कहते हैं, दैट्स आवर मदर टंग. तो यहाँ पर हम इस कमरे में ही अगर देखें तो बहुत डाइवर्सिटी है. हमारे साथ इस मंच में एक तमिलन मौजूद है, हमारे साथ प्रोफेसर सकलानी हैं जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी, हमारे साथ प्रोफेसर मंडल हैं जिन्होंने हमें अंग्रेज़ी में स्पीच दी और एक कहानी बताई. संध्या मैम ने दोनों लैंग्वेजेस मिक्स की. और अगर मैं आप सभी से पूछना चाहूँ एक नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. आप में से कितने पंजाबी हैं, जिन्हें पंजाबी आती है? ओके. तमिल, मराठी, उर्दू, संस्कृत, ओके, गुजराती, ओके, एंड एनी फॉरेन लैंग्वेज? इंग्लिश. कॉली. तो डाइवर्सिटी हमारे कमरे में बहुत सारी है यहाँ पर. और हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कुछ ऐसा ही है, एक क्विज़ है लैंग्वेजेस पर, और उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी प्रोफेसर आर मेघनाथन को. सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज. Very much. After that overwhelmed speech by Isai Kavi, and the other speeches by our director and secretary, our head of the department. I'm not speaking, don't worry, I'm not speaking anything, yeah? All right, even though I know Bharati. So let's let's watch a kind of 3 or 4 minutes video we have developed. This institute, Central Institute of Educational Technology, has developed. Let's watch that, then we'll have another some 10 questions quiz, then we'll break. Okay, fine. All right. Video. Bharati, Samudaya Kavi, Subramanya Bharati, the nationalist revolutionary poet. This is the story of Subramanya Bharati. வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் வந்தே மாதரம் என்போம் எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் வந்தே. Let's voice Vande Mataram. Let's bow before the motherland. This was the voice which kindled the spirit of our long struggle for independence. Yet another echo of the same voice. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை. This means fear not, never ever fear. Even if the sky breaks on our head, fear not, never ever fear. This instilled the spirit of struggle for freedom to free our motherland from the unspeakable suffering at the hands of the colonizers. Yes, this was the volley of iron-feasted arrows of poetry of Subramanya Bharati, who is fondly revered as Desiya Kavi, the nationalist poet. Subramanya Bharati is a revolutionary poet, Desiyavadi, writer and journalist. Bharati had his early education in Ettayapuram, a small town in Thoothukudi district of Tamil Nadu, and in Varanasi, where he found his spiritual and nationalist thirst being catered to, and from where he found his vocation, writing poetry, serve the nation as a humble servant. Bharati is one of the tallest literary figures in Tamil and a freedom fighter who transformed not only the Tamil poetry and journalism but also the modern Indian poetry into the new poetry, Puthu Kavitai, the modern blank verse.
Bharati lived for only 39 years, but is reigning the national spirit and modern poetry as an instrument of social change. He wrote in many newspapers and journals, which include The Hindu, Bala Bharata, Vijaya, Chakravardhini and Swadesh Mitran, and India. Bharati was a polyglot and spoke more than 25 languages and was well versed in Sanskrit. Bharati gave sleepless nights to the British by his writings and support to the freedom fighters like V.O. Chidambaram Pillai and Subramanya Shiva. He would escape to the French-ruled Pondicherry when the British attempted to arrest him. His poetry upholds the emancipation of women and their rights and the oppressed class. He writes in his Papa Pattu, Song of the Little Girl Against Caste, ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தட்டி உயர்த்தி சொல்லல் பாவம் ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா. This means there is no caste. Let's not discriminate people as upper or lower. Bharati attended the All India Congress session held in Banaras and at Calcutta and wrote in praise of the freedom movement led by Bal Gangadhar Tilak, Dadabhai Nauroji and later by Gandhiji. The lucid romantic poetry, Koil Pattu, Song of the Koil, Draupadi Sabhadam, Vow of Draupadi, Kannan Pattu, Song of Kannan, Krishna, hundreds of patriotic songs and songs against social evils, unfounded beliefs and superstitions were his celebrated works. He also translated Vedic hymns, Patanjali's Yoga Sutra and Bhagavad Gita into Tamil. Bharati celebrated the independence of India decades before 1947. He wrote, this means let's dance and sing that we have won of much longed freedom. Sensing his arrest by the British, Bharati escaped to Pondicherry. From there, he edited and published many journals and newspapers. During his stay in Pondicherry, Bharati had the acquaintance of leaders like Aurobindo, Lajpat Rai, and V.V.S. Iyer, who had also sought asylum under the French. Bharati worked with Sri Aurobindo in the Arya Journal and later Karma Yogi in Pondicherry. Bharati was arrested and imprisoned in Cuddalore Central Prison for 3 weeks in November 1918 when he entered India near Cuddalore. Mahatma Gandhi was enthused by Bharati's speech and actions when he had met the Mahatma and had a long dialogue with him. This great son of India and the perpetual song of India, Subramanya Bharati, was stricken by the Mylapore temple elephant who he was feeding every day. His already ailing health deteriorated and the revolutionary poet and the revolutionary spirit passed away unsung on the 11th of September 1921. Bharati longed for an India as a Bharataya Samudayam, Bharati community, not simply a country of political arrangement, a country which stands tall and distinct as a nation. Bharati sang, Bharata Samudayam, Vargave, Varga Varga Bharata Samudayam, Vargave. Long live the Bharataya community. Thanks to the team, within a day it was done. Okay, let's quickly move on to the quiz. So, I'm not asking many questions. And a request to NCERT people, faculty, and our research fellows, junior project fellows not to answer. Please.
because you know that. And you can raise questions, but don't answer, because then my quiz will be flat. Nah? Okay, all right. Okay, let us look at it. Come on. That's the request. Bhartiya Bhasha Diwas, Indian Language Day. And look at the first question. And Diksha has revealed some of my answers. However, okay. How many language families are spoken in India? 5, 3, 6, 7. Okay, before you answer, Ashish will give you a toffee, whoever answers first. Yeah. Yes. Anybody? Yes, sir. 22? 5. Okay. Ashish, chocolate de do. Okay. Next question. Yeah. It's 5 language families, even though Diksha said there are 2 more families not listed yet. Officially 5 languages. Then, which is the official language of India? Hindi, English, all 22 languages, Hindustani. Yes, ma'am. Yeah. All official languages of India. Anybody from this side? English. Achha, I'm an English professor, but I'm very unhappy with you. Okay, next. Anybody? Official language of India. Hindi. Okay, all right. Kiske bhi de do. Okay, then okay. Then third question. Come on, quiz. Which language family does Kannada language belong to? Dravidian language family, Indo-Aryan language family, Tibeto-Burmese, Sanskrit language family. Sanskrit language family, wrong. So Dravidian language family, this young man. Raju, that young man in blue shirt. Okay. Next question. Fake though. Okay. How many languages are listed in the 8th schedule of the Indian Constitution? Okay. 26, 16, 18 and 22. Okay, agreed. Okay. सबको दे दो. सबको दे दीजिए. सबको दे दीजिए. Okay. Next. Yeah. सबको दीजिए. Sanskrit is. इधर एक दे दो. Somebody, एक और लेना इनका. Sanskrit is, come on, the official language of India and an ancient language, associate official language of India, one of the 22 scheduled languages and a classical language, one of the minor languages and a modern Indian language. Okay, agreed. It is also a modern Indian language and a classical language. Fine. Next. Which one of the following languages is written in Devanagari script? Tamil, Kashmiri and Punjabi. Okay, Konkani. Someone said here. Okay, you will get second toffee. Okay, all right. Next question. Okay. Bodo is spoken majorly. Okay. We have deliberately made the questions. Okay, all right. Deliberately, because I was really annoyed when you said we could not say what is the official language of India. So that's why we should know our languages. That was the whole, our dignitaries on the stage was trying to tell us. Okay, next question. Which part of the country is Khasi language spoken? Meghalaya. Agreed. Fine. Well done. Okay, now you'll get another one. Okay, next question. Okay. Read the question carefully. Here is a language which belongs to Indo-Aryan family and spoken in the state of Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh by about 16 million people. It is counted as a dialect of Hindi. What is the name of the language? Marathi, Chhattisgarhi, Kondi and Bengali. Chhattisgarhi, agreed. Yeah, both of them have answered. Next question. Which language do the following letters of the alphabet belong to? Telugu, Bodo, Kashmiri and Urdu. Wrong. Kashmiri. So when Urdu becomes wrong, Kashmiri. All right. Okay, one more question.
Which one of the following languages is written in Persian script? Everybody knows. Okay, fine. Okay, one more question. Okay, this is the language based on which first linguistic state was formed in 1953. What is the name of the language and the state? Andhra Pradesh and Telugu. Fine. One more. How often is the census conducted in India? Every 10 years. But we could not do 2021 census because of the pandemic. Okay. I have one. This one? Nagaland. Fine. Okay. This is a very difficult question probably. Which one of the following is not true of a sign language? The sign language. Sign language is a natural language. Sign language does not have a grammar. Which one? Everybody says something. Okay, what is the correct answer? Anybody, please? Yeah? So, sign language has a grammar. Sign language does not have a grammar is wrong. Okay, sign language has a grammar. Okay. Which of the following is not true of Tamil? Is not true of Tamil. It's a modern Indian language. C is wrong. Okay, it is okay. All right. Okay, this is another question. Yeah, a thought-provoking question. Gandhiji advocated the idea of this language. It is the combination of two major Indian languages which have commonalities. Gandhiji felt that it would be acceptable to people from all the communities. What is the name did Gandhiji give to this language? Hindi, Urdu, Bhartiya Bhasha, Hindustani. Hindustani. Okay. Okay, thank you very much for your participation. And also, I will. Tanvi asked so many questions about how many people know this language, Punjabi, Tamil. Then let me ask you one question. Probably I don't want an answer. No, but one thing actually, you question yourself and answer yourself. Everybody answer. Not a quiz. All right, everybody answered. Thank you. I agree with that. I accept it. Okay, I have one question for you before I leave. Is there anyone here who knows only one language? That's what they spoke. वेरी फन गेम एंड जैसा कि सर ने कहा कि उन्होंने क्वेश्चन भी खुद पूछे, आंसर भी खुद दे, पर टॉफी सबने खाई. तो जल्दी से हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करना चाहेंगे. हमारे साथ हैं बजरंग बली कुहार. इन्होंने कविता लिखी है जो इन्होंने खुद लिखी है और आइए प्लीज स्टेज पर. ये हैं जूनियर प्रोजेक्ट फेलो भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी से. प्लीज. नमस्कार. यह कविता मैंने आज ही भाषा दिवस को केंद्रित करके ही लिखी है. कविता का शीर्षक है भाषा ही बस आशा है. कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं. भाषा ही बस आशा है, बाकी सब निराशा है. भाषा है तो हम तुम सब इंसान हैं, नहीं तो समझो हम पशु समान हैं. भाषा ना होती अपनी दुनिया में तो बोलो हमारी क्या पहचान है. जहाँ में मनुष्यता ने इसे क्या खूब तराशा है. भाषा ही बस आशा है, बाकी सब निराशा है. भाषा सुबह, भाषा शाम, भाषा रात है. भाषा तेरी मेरी उसकी सबकी बात है. भाषा में जगना है, भाषा में ही सोना है. भाषा से ही हम सबको अपना होना है. भाषा हम सब में प्रेम की एक अभिलाषा है. भाषा ही बस आशा है, बाकी सब निराशा है. असंख्य भाषा हमारे इस जहान देश में, कुछ कुछ सीखा हमने अपने परिवेश में. सारी भाषाओं का संबंध बहन बहन का है, ना तोड़ो इसे श्रेष्ठता के
किसी आवेश में, ना समझो इसे द्वित क्रीड़ा का कोई पासा है, भाषा ही बस आशा है, बाकी सब निराशा है। धन्यवाद। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है और जैसा कि आपने बताया कि आज सुबह ही लिखी है, तो इंस्पिरेशन के लिए आज का दिन इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। भारतीय भाषा उत्सव आज हम मना रहे हैं यहाँ पर, और इस कार्यक्रम को ख़त्म करने का समय आ गया है, तो हम एक आखिरी मेहमान को अपने यहाँ इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुअज़्ज़मुद्दीन सर। प्लीज़ स्टेज पे आइए, आपसे गुजारिश है यहाँ पर आइए, और हमारे जो मेहमान हैं जो इस जलसे में मौजूद हैं उन्हें प्लीज़ शुक्रिया कीजिएगा। सभी को मेरा खुलूस भरा आदाब। बहुत सारी ज़बानों में यहाँ बातें हो रही हैं, बहुत सारी ज़बानों के लोग यहाँ मौजूद हैं, एक अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू में कुछ इज़हार ख़याल करूँ, उर्दू ज़बान में, तो ये बेहतर होगा। आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले तो चूँकि मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले मैं हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जिसको बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज इस मंच के हवाले से सुब्रमण्यम भारती जी को बहुत सारे लोगों ने जाना, और न सिर्फ यहाँ पर मौजूद लोगों ने जाना बल्कि यहाँ से दूर दूर तक बातें जाएंगी। तो हुकूमत हिंद का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा शुक्रिया मैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत ही समझबूझ के आदमी हैं, बहुत रहनुमाई करते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। जिस भी मीटिंग में जाते हैं तो बहुत अच्छी बातें सुनने को मौका मिलता है। उन्होंने इस प्रोग्राम को NCERT में करने का फ़ैसला लिया, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि तमाम भाषाएँ, तमाम ज़बानें दिलों को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है, तहज़ीबों को जोड़ती हैं, एक दूसरे को करीब लाती हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मौका दिया। और इसके साथ एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बहुत अजीज़ मेहमान हैं, तमिलनाडु से तशरीफ़ लाए हैं, आपका चिरू ईसावी कावी रामनन साहब जो बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने जिस तरह से एक अपनी शुरुआत को में एक हम्द पढ़ी है, उर्दू में जो आपने जो कुछ कहा, हिंदी भी या हिंदुस्तानी ज़बान में जो इसको हम हम्द कहते हैं, हम्द मतलब खुदा की तारीफ़ जिसमें की जाए, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने उसको पढ़ के और एक बहुत अच्छा माहौल बना दिया, बहुत अच्छा समा बांधा। और जिस तरह से आपने सुब्रमण्यम भारती और हिंदुस्तानी ज़बानों के हवाले से उनकी पूरी शख्सियत का एतराफ़ किया है, अहाता किया है, वो हम जैसे तालिब इल्मों के लिए, कम मालूमात रखने वालों के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे। और जिस तरह से आपने बीच बीच में अपने गीतों से और संस्कृत के श्लोकों से जिस तरह से उसको जो है सजाया है, वो बहुत काम की चीज़ है। और हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आप इस तरह की पहली शख्सियत यहाँ पर आई है जो इस तरह के वरना तो बहुत लोग संजीदगी से बातें करते हैं और ज़्यादा संजीदगी से की जाने वाली बातें कभी कभी ऊपर से गुजर जाती हैं, तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई आपके साथ, पूरी तवज्जो से सभी सुनते रहे। हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। NCERT की तरफ से, भाषा विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्टेज पर गाइड पर बैठी तीसरी शख्सियत हमारे सामने प्रोफेसर मंडल साहब की हैं। प्रोफेसर मंडल के साथ काम करने का भी इत्तेफाक हुआ, उनको करीब से देखा भी है, देखते भी रहते हैं, बातें भी होती रहती हैं। लेकिन आज जिस तरह से उनका एक अलग अंदाज सामने आया, जिस तरह से उन्होंने पानी के हवाले से बात की, लैंग्वेज के हवाले से बात की, और पूरे एक्शन के साथ, उनका ये एक्शन पहली मर्तबा देखने को मिला कि इतने खूबसूरत अंदाज में भी वो बात कर सकते हैं। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर मंडल, जो हमारी NCERT के सेक्रेटरी भी हैं। प्रोफेसर संध्या सिंह जो भाषा शिक्षा विभाग की हेड हैं, और अक्सर वो हुक्म देती रहती हैं कि कम बोलिएगा, तो और एक ऐसे आदमी को कहती हैं जो वाकई कम बोलता है, तो उसके लिए जब ये कहा जाए कि कम बोलिए तो वो क्या बोले फिर। लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जब मौका हमको दिया
और जिस मेहनत से उन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, सजाया है, जिस तरह से तरतीब दिया है और ख़ुद अपने मातहतों से उसको तरतीब दिलाया है, यकीनन वो बहुत बड़ी हौसले का काम है। कम वक्त में बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस प्रोग्राम को जाहिर सी बात है यहाँ सुनाने वाले 3-4 लोग हैं, सुनाने वाले और सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सुनाने वाले मौजूद हों, सुनने वाले ना हो तो कोई मज़ा नहीं आता। ये तमाम भीड़ जो यहाँ पर मौजूद है 3 हिस्सों में बटी हुई है, ये मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए हुए हैं। जैसा कि मुझे कहा गया कि इसमें यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी है। सनातन दास कॉलेज, सूरजमल इंस्टीट्यूट और जामिया मिलिया इस्लामिया के बहुत से असातिज़ा भी मौजूद हैं और टीचर्स भी मौजूद हैं। आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आप आज के छुट्टी के दिन को आपने तैयार करके छोड़ करके यहाँ तशरीफ़ लाए और इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत की। हम आप तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे प्रोग्राम के में जिन लोगों ने, प्रोफेसर संध्या सिंह का तो हाथ ही है, बाकी प्रोफेसर मैघनाथन जी हैं, प्रोफेसर फारूक अंसारी साहब हैं, केसी त्रिपाठी साहब और साहब भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो है, सरयुग यादव साहब, ये सभी लोग जो है इस प्रोग्राम के तैयारी में दिलचस्पी लेते रहे और अपने मार्गदर्शन देते रहे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने अपने JPF से और रिसर्च एसोसिएट से काम लिया है, वो भी बहुत उन्होंने वक्त पे साथ दिया है। मैं इधर देखता हूँ अब्दुल रज़ाक भी हैं, उधर बजरंग बली भी शामिल थे और कई लोग इसमें शामिल हैं। जिस प्रोग्राम को मुख्तलिफ पोस्टर बनाने में और लिखने लिखाने में बाहर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो उनका बहुत बड़ा हाथ उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, बनाने में। तो वो सभी हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। हम तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अभी इसमें कई नाम रह गए हैं शुक्रिया अदा करने में। अरे मीनाक्षी सर, सॉरी, अरे सामने बैठी हैं मीनाक्षी का। नहीं, देखिए कभी तो ज़बान तो काम करती, कभी जहन नहीं काम करता, सिर्फ ज़बान काम करती है। तो इस वक्त तो आप बड़ा शुक्रिया आपका। जी हाँ जी। और एक दीक्षा कुंवर साहिबा ने बहुत अच्छी मालूमात दी जो है हमें, और जिस तरह से उन्होंने एनालिटिकल अंदाज में एनालिसिस करके ज़बानों के बारे में बताया कि किस ज़बान में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे एक दूसरे से मिलती भी हैं और अलग भी होती हैं। तो और इसके पहले भी उन्होंने कि एक प्रोग्राम दिया, तो हमें खुशी है कि हमारे शोबे में इस तरह के लोग मौजूद हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर आर मैघनाथन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रोग्राम को दिलचस्प बनाने में, चूँकि जाहिर सी बात है कि जो क्विज़ के ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने, उसमें बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो ज़्यादातर लोगों को मालूम थे, लेकिन बहुत से लोगों को सारी बातें नहीं मालूम होती जो है। लेकिन आज उन्होंने इस क्विज़ के ज़रिए जो अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की है, एक हमें मालूम, लेकिन हम बेदार हुए कि हमें इस तरह से भी अपने मालूमात को में इजाफा करना चाहिए। तो आगे मैघनाथन का इस बारे में बहुत बड़ा हाथ है। और जिस तरह से जो है जवाब देने वालों को, न देने वालों के, वो उन्होंने टाफ़ी का भी निज़ाम कर रखा था। पता नहीं वो टाफ़ी उन्होंने अपने पास से ख़रीदी या कुछ में शोबे का हाथ है, ये नहीं मालूम जो है। लेकिन हम उनके भी शुक्रगुजार हैं जो है। और बजरंग बली साहब ने जो एक अच्छे कवि लगते हैं हमें, इसके पहले भी वो पेश कर चुके हैं, आज भी उन्होंने कविता पेश की। और जिस तरह से भारतीय भाषाओं के तय उनका एक जज्बा काम करता है, और वाकई ज़बानें जो दिलों का जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं काम करती। और ये सारी तहजीबों को करीब लाने का मकसद होता है। तो ये तहजीबों को भी जोड़ती हैं ज़बानें और दिलों को भी जोड़ती हैं और इंसान को एक दूसरे के करीब लाती हैं। तो इस तरह ये एहसास उनका जो है था, उस जो गीत उन्होंने पेश किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी खुशी भी है हमें और दुआ भी है। और प्रोफेसर संध्या सिंह से भी गुजारिश करते हैं कि उनकी हौसला अफजाई बराबर करती रहें, ताकि हाँ नहीं, तनवी साहिबा तो वही बहुत अच्छा, उनका एंकरिंग तो कई प्रोग्राम में उन्होंने की हमारे साथ जो है। लेकिन आज की एंकरिंग उनकी कमाल की थी जो है, जिस तरह से उन्होंने खुद जो है इसमें दिलचस्पी ली और दिलो जान से दिलचस्पी ली है। तनवी खुराना का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और दूसरे यहाँ पर
जो ये पूरा मंच CIT 200 कमरा नंबर 202 सजा हुआ है, उसमें जाहिर सी बात है कि CIT के पूरे अमले का, टेक्निकल स्टाफ का, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल अपने आप को तैयार रखा है कैमरों के साथ, दाएं बाएं आगे पीछे जिस तरह से तस्वीरें जो दिखाई जा रही हों, जिस तरह से उन्होंने इसको जो है तरतीब दिया है, वो भी हमारे शुक्रिया के ख़ास मुस्तहिक हैं। और सबसे अहम बात मैं गुजारिश भी करता हूँ कि आज ये जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत मुख्तसर है। NCERT में इस तरह के प्रोग्राम कम होते हैं और छुट्टियों के दिन में तो ख़ास तौर से इतनी भीड़ नहीं होती। जिस तरह से आप लोग दूसरी जगहों से, दूर दराज जगहों से आए हैं और अपना आराम को छोड़कर अपने दूसरे कामों को त्याग करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वाकई आप शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। और ये बातें सिर्फ अपने तक ना रखिए, बल्कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को ज़बानों के हवाले से, हिंदुस्तानी ज़बानों के हवाले से किस तरह ख़ुद को मालामाल कर सकते हैं और दूसरों को मशवरा कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत। थैंक यू सर, आपका भी शुक्रिया, सभी को शुक्रिया करने के लिए। एक बार फिर से कैन वी प्लीज हैव द राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल आवर गेस्ट। तो आज यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सुब्रमण्यम भारती के बारे में जाना, हमने पाणिनि के बारे में जाना, हमने मातृभूमि के बारे में बहुत कुछ जाना, भाषाओं के बारे में बहुत कुछ जाना। और ये जो डाइवर्सिटी है, काश हम इसे ऐसे ही मेंटेन करते रहें और आज का जो दिन है भारतीय भाषा दिवस, वो हम ऐसे ही मनाते रहें हर साल। आज 2022 से शुरू हुआ है, पर आगे हर साल हम साथ में ऐसे ही मनाते रहें। आई रियली होप सो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, इतना अटेंशन देने के लिए हमारे गेस्ट्स को और इतना एंजॉय करने के लिए एक्टिविटीज़। और जैसे कि प्रोफेसर रमनन ने कहा कि पीस इज़ हैप्पीनेस, तो मुझे लगता है ये एडवाइस सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर ही दे सकते हैं। सो इट्स नेवर अदरवाइज, हैप्पीनेस इज़ नॉट पीस, पीस इज़ हैप्पीनेस। सो ट्राई एंड फॉलो दैट इन योर पर्सनल लाइफ। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। सो इसके बाद इस प्रोग्राम को हम यहीं एंड करें, पर इसके बाद चाय का ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप प्लीज़ चाय पी के ही जाइएगा। और इससे पहले कि हम जाएं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम जहाँ पर भी पैदा हों, हम जहाँ पर भी पढ़ाई करें, हम कुछ भी हों, किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी रीजन से हों, कास्ट से हों, कम्युनिटी से हों, एट दी एंड हम भारतीय हैं। और किसी भी भाषा हमें आती हो, हम एट दी एंड भारतीय हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स प्लीज हैव द नेशनल एंथम। प्लीज आप सब खड़े हो जाइए, एक लास्ट रिक्वेस्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता। जय जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम।